Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Microbes in Human Welfare and the topic Microbes in Biogas Production. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2014 and is also a NCERT exemplar question. So the question is, the diagram above is that of a typical biogas plant. Explain the sequence of events occurring in a biogas plant. Identify A, B and C. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक बायोगैस प्लांट का डायग्राम दिया है, तो हमें इस बायोगैस प्लांट में होने वाले इवेंट्स को एक्सप्लेन करना है और हमें ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले बेटा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ए होता है स्लज, बी इज गैस होल्डर एंड सी इज डंग एंड वाटर। क्लियर बेटा। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, इस डाइजेस्टर में हम डालते हैं बायो वेस्ट, फिर ये डंग और वाटर जाते हैं इस डाइजेस्टर में। डंग में बेटा प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजेंस और मिथेनोजेंस बायो वेस्ट पे एक्ट करके उनको डिग्रेड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जो कि होती है बायोगैस। तो ये जो बायोगैस होती है ये इस गैस होल्डर में कलेक्ट होती रहती है और इससे एक पाइप कनेक्टेड रहता है जिसके थ्रू ये बायोगैस घरों में जा सकती है और कुकिंग और लाइटिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर जो बाकी का स्लज बच जाता है उस स्लज को हम कलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, जिसको हम एज फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। क्लियर। सो द आंसर इज बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग predominantly methane produced by the microbial activity and which may be used as fuel. Certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2. These bacteria are collectively called methanogens and one such common bacterium is Methanobacterium. These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment. These bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of cattle. A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. Thus, the excreta, that is dung of cattle, commonly called gobar, is rich in these bacteria. Dung can be used for generation of biogas, commonly called gobar gas. The biogas plant consists of a concrete tank 10 to 15 feet deep in which bio wastes are collected and a slurry of dung is fed. A floating cover is placed over the slurry which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity. The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses. The spent slurry is removed through another outlet and may be used as fertilizer. Cattle dung is available in large quantities in rural areas where cattle are used for a variety of purposes. So biogas plants are more often built in rural areas. The biogas thus produced is used for cooking and lighting. So I hope this question is clear to you. Thank you.